money, पैसा. We all constantly think about it. हम हमेशा सोचते हैं इस बारे में कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, what is our exact financial condition, and most important question is whether we have all figured out. क्या सारी चीज़ें हमने समझ ली है कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है या हमारा भविष्य सिक्योर है या नहीं है. बट द रियल क्वेश्चन इज़ इफ़ वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन या ये चीज़ें कैसी हैं, तो हमें थोड़ा सा सोचना होगा इस पर. वी नीड टू टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक and look at the solution in a different way. Now, if we want to understand this problem a bit scientifically or logically, I would say, ठीक है, तो we need to look at it based on generations, I think, like whether you are a millennial, आप 80-90s में आप पैदा हुए थे, या आप generation Z हो, 90s to 2010 में you were born somewhere around that, or you are the generation alpha, like everyone who is born from 2010 almost till date. So why we want to understand कि ये generations क्या हैं is because we are very diverse. Okay, not, in fact not we, but the society is very diverse in various ways in these generations. Okay, so the socio-cultural dynamics was completely different. Okay, now this is not based on कहीं से मैंने पढ़ा है या कहीं से देखा. Like these are the things which you observe all around you, and mostly I feel it's true, even if we cannot call it a blanket statement or an absolute reality. But with every previous generation, if we look at things in the hindsight, अगर हम अपने parents को देखें, or we look at our relatives, like who are little elder to us or senior to us, they had never heard, or they are still बहुत uncomfortable with the fact of going for a loan or buying anything on EMI. मतलब उनके टाइम पे तो घर भी लोन पर लेना was a kind of sin. They were even scared of that thought, which is now a perfectly normal sane guy would do it. Okay, so with now, what has changed? क्या change हो गया? मतलब what has changed so far? On one hand, okay, we have this booming economy where India is going to be a superpower economically in the next maybe a decade. And on the other hand, we have people all around us who are in debts, housing loan, car loans, several EMIs, and that's perfectly normal. And I'm quite confident in the fact that जो भी सुन रहा है, every one of you sort of like agrees to or are looking at the same picture what I'm talking about. Okay, now what begs the question, okay, what is right or wrong? इसमें क्या सही है, क्या गलत है? क्या नए जनरेशन बेटर कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स थे, something what they have done wrong? Really? So before we actually look at it, we have to understand very deeply, okay, like pay a little attention to how the culture has evolved over decades. Okay, तो अगर हम 80s and 90s में जा रहे हैं, okay, in that duration the media was very limited. Okay, like शायद दूरदर्शन था या something of that sort. Radio was there. ऐसी there was no Instagram, social network नहीं था, there was nothing there. So the culture was built with people all around us, okay, and the fear, the anxiety, the happiness, जो भी वो बोलते थे या उनके विचार थे, उसी हिसाब से कल्चर बनता था. And that was the thing which was drilled in the heads of our parents or grandparents. And that is why हमेशा उन्हें इस बात का डर लगा रहता था that
they want to build a secure future for themselves. Okay, now what has changed now in the past 2 decades? Okay, firstly, economically, India has become more of a liberalized state. ठीक है. एंड सेकेंडली, इंटरनेट एंड पावर ऑफ मीडिया, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी तेज़ी से आई हैं एंड इट हैज़ पेनिट्रेटेड एवरी बिट ऑफ आवर लाइफ्स. ओके, तो द वॉइस ऑफ इनसिक्योरिटी, लाइक अभी भी हमारे पेरेंट्स इस बात को बोलते हैं, एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू गाइज दैट यू हैव टू सेव फॉर योर फ्यूचर. ठीक है, आई होप एवरीवन अग्रीज टू दिस. ओके, but your voice has become very weak because we are constantly glued to our phones and the culture currently is a lot more virtual. मतलब जो हम इंटरनेट पे देखते हैं या जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस से जो हम इंस्पायर्ड होते हैं, वो हमारा कल्चर ज़्यादा है. So unknowingly or knowingly, we are feeding or being fed of a content which has redefined our goals. तो जब हम कोई इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट देखते हैं या कुछ फेसबुक पर देखते हैं एंड उस पर हम देखते हैं कि बहुत लाइक्स हैं या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लाइक वी ऑल्सो वॉन्ट दैट अटेंशन एंड दैट इज़ बिल्ट इन अस. तो हम वही चीज़ करना चाहते हैं. ठीक है, वी डोंट बॉदर अबाउट द आउटकम ऑफ इट, लाइक वी वॉन्ट टू डू दैट. ओके, तो अब हो क्या रहा है इसके, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ इट? ऐसा होने से क्या हुआ? तो पहली चीज़ हमें समझना है, वी डोंट हैव टू मलाइन एनी थॉट प्रोसेस. ओके, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से देखना है. आज क्या है कि वी लिव अ लाइफ फील्ड ऑफ एक्साइटमेंट. मतलब हमको जो मन में आता है हम ऑर्डर कर देते हैं, खा लेते हैं. अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी हम ऑर्डर करके अपनी वी हैव थिंग्स एट आवर फिंगर टिप्स. बट द मोमेंट, मतलब जैसे ही हमें ये थॉट आता है कि अरे फ्यूचर कैसा होगा, या हमारे पास कितनी सेविंग्स है फ्यूचर के लिए, या कल हमारे पास जॉब या बिजनेस नहीं रहेगा, then we become very very afraid, very frightful, because we have not been built culturally to think about it based on these past 2 decades. Exactly the same way, okay, our parents who were so focused on savings, जब उन्होंने भी अपनी retirement ली थी और they eventually had to stop working, उन्होंने भी इस चीज़ को फील किया दैट दे हैव मिस्ड एवरीथिंग इन देयर लाइफ्स. दे हैव लिटरली लिव्ड द लाइफ ऑफ अ रिक्लूज. उन्होंने सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए सो दैट दे हैव अ सिक्योर्ड फ्यूचर. तो इवन दे आर नॉट एब्सोल्युटली लाइक फीलिंग वंडरफुल अबाउट इट. सो इन एसेंस ये कुछ नहीं है, ये एक ट्रेड ऑफ है. आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग आपके गोल्स के बेसिस पर होती है. ठीक है, सो what I would say, think about it, okay, and I really hope that I'm actually very eager to see what you guys think about it. So comment section में कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, some thoughts which can post this video, take it further,